ठीक है बच्चों. So we were discussing about the multi-quadrant operation of the drive, and we are considering this example of a lift. We have taken two assumptions that if this cage is empty, the weight of this counterweight will be high, whereas if this is a fully loaded cage, weight of this cage will be higher than the counterweight. Simple thing, right? Now let us see a case. When your cage is on the lower ground or lower level to the counterweight, but this cage is fully loaded. This is a loaded cage. You can think of a case कि suppose you want to move, you with your friend moves to up to a second level or a third level, and you are standing on the ground floor, right? You have entered the lift. Now you have pressed the button that lift should go from level 1 to level 3, right? Consider that case. So what you want is the upward movement, yes or no? Yes, sir. Motion we want in upward direction. So for upward motion, this drum needs to be rotated in clockwise or anti-clockwise direction? Anti-clockwise. Clockwise. Means in the direction of the motion? Yes or no? Yes, sir. Right. So your motor should rotate because your motor is being attached to this drum. So it should rotate in clockwise, anti-clockwise direction. Right? Now see, as this cage is fully loaded, what about the net torque? अगर मैं फ्री छोड़ दूं तो ये किस तरफ जाएगा? लोड टॉर्क जिधर वेट ज्यादा होगा उधर की तरफ टॉर्क ज्यादा होगा, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So torque will be acting, load torque will be acting in this direction. Yes, sir. क्योंकि केज जो है फुली लोडेड है. Yes, sir. Now tell me, in which direction your motor has to produce torque such that this fully loaded cage can be uplifted? Sir, in the direction of omega. In the direction of this omega, yes or no? Yes, sir. This should be the motor torque. Motor torque should be in the direction of the speed. Yes, sir. Yes or no? तभी तो ये ऊपर जा पाएगा. अरे बोलो बच्चों, जल्दी बताओ, कुछ समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. So if we see this case, we can conclude that your motor torque and the speed and the direction of this motor is in same direction. Yes, sir. That means it's a case of motoring. Yes, sir. Yes, sir. That means your motor, that motor attached to it will be in motoring mode and complete drive will be in motoring mode. Yes, because the movement is such that speed is in positive direction, means motion is in upward direction, we can call it as forward motoring. So definitely the case of a lift which is taking the passengers up from a certain level will work in a forward motoring mode, have to work in a forward motoring mode. Is it clear? Yes, sir. Now consider a case when the cage is empty, lift is on the ground, right? But it is empty and someone is standing over here at higher level and he has called the lift. है ना? लिफ्ट नीचे खड़ी थी लेकिन आप लोग ऊपर थे, आपने प्रेस कर दिया बटन, अब लिफ्ट खाली ऊपर आ रही है. ये समझ रहे हैं क्या हो रहा है? कैसी आ रही है लिफ्ट? खाली आ रही है ऊपर की तरफ, ताकि आप उसमें बैठ सके. ठीक है, तो स्टिल मोशन इज रिक्वायर्ड इज
Upward? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Right. Motion required is upward. That means your motor should rotate in anti-clockwise direction. Direction of the rotation should be anti-clockwise so that it can support the motion. Yes, sir. Right. What about the load torque? See the scenario. Here your cage is empty. Because cage is empty, that means counterweight is having higher weight as comparison to the empty cage. Yes, sir. That means your load torque will be acting in this direction. Yes, sir. Now, to have the controlled motion, your motor has to generate the torque in opposite to this load torque. Yes or no? Otherwise, there will be a free fall. Yes, sir. Seeing the signs of omega m and tm, can we conclude whether it's a braking mode or a motoring mode? बोलो. Yes, sir. हाँ? Sir, braking. अरे बताओ भैया. Sir, it's braking. ब्रेकिंग होगी सर. ब्रेकिंग मोड होगा. आप तो बिल्कुल और सोए से लग रहे हो सब. इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ब्रेकिंग होगी, बट बिकॉज मोशन इज अपवर्ड वी विल राइट इट एज फॉरवर्ड ब्रेकिंग. ठीक है. Yes, sir. ओके. लेट मी आस्क यू कि सपोज केस इस तरह से है. मैं नहीं कहता कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का केस होगा कि फोर्थ का. मुझे बताओ ये केस कौन सा होगा. मैं अभी बाद में ड्रॉ करूंगा. यहाँ आई विल कंप्लीट दिस फिगर लेटर ऑन. मुझे ये बताइए ये केस कब बनेगा. यदि योर केज इज एट हायर पोजिशन, right, whereas definitely then counterweight will be on the lower position. If this cage is empty and we want to bring it down, motion required is downward, right? Then in which mode this drive will be working? When it is being approaching the lower level. रिवर्स मोटरिंग. बताओ बच्चों. रिवर्स मोटरिंग सर. एक का हो गया और को भी लिखने दो. बताओ भैया रिवर्स मोटरिंग कह रहे हैं. अभी हम पूछेंगे क्या कारण है. सर रिवर्स ब्रेकिंग. रिवर्स ब्रेकिंग. एक कह रहा है रिवर्स मोटरिंग. ठीक है, और बताओ. सर रिवर्स मोटरिंग. रिवर्स मोटरिंग. और कोई जल्दी से अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखो. ये अमूल्य वोरा ने क्यों लिखी अटेंडेंस, हमने तो कहा नहीं. पता नहीं. हर्ष आप इनको बता दीजिएगा कि अटेंडेंस लिखने के लिए मना किया हुआ. चलो जल्दी से सब बता रखा आंसर लिखो. है हर्ष क्या बोले. बता रखा सर ऑलरेडी. मान नहीं रहा है. सर मतलब बता दिया था मैंने शुरू में कि अटेंडेंस बाद में लिखना. चलो आज एक बार मेरे कहने से स्पेशल बता देना. नहीं मानता तो फिर हमें बताना. ओके सर. ठीक है ना. बहुत सारे लोग इसका आंसर आए हैं. लेट अस सी कि वैसे सब लोग अधिकतर कह रहे हैं रिवर्स मोटरिंग होगा, है ना. कैसे होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सी वी वांट डाउनवर्ड मूवमेंट, सो डेफिनेटली योर मोटर नीड्स टू बी रोटेटेड इन दिस डायरेक्शन. यस और नो. As empty cage needs to be pulled down, that means your counterweight is heavy. That means load torque is acting in this direction. Yes, sir. That means to bring that down, your motor has to produce a torque in this direction, in the direction of the motion. Yes, sir. Now see, because your motor torque and the motor direction of rotation is same, that concludes that drive
under this mode or under this operation will be in motoring mode, Spring mode. right? And as we are bringing it down, the speed is such that, or rotation is such that it is bringing the lift down. We'll call it as reverse motoring. Is this clear, bachcho? Yes, Is sir. this clear? Clear, So, sir. and this quadrant where reverse motoring will be a third quadrant operation or a fourth quadrant operation? Third quadrant. Yeah, it will be a third quadrant operation. So a lift that is on the higher level, but we want to bring it down with an empty cage. This will be an example of third quadrant operation, as motion required is to bring it down, and for this speed needs to be in this direction, whereas load acting will be in this direction. So your motor will be compelled to generate the motor torque in the direction of the motion, right? So that means under this operation, under this condition, your lift will be working in reverse motoring Motoring mode. mode. Right. Now the last one. When will be your drive? When will be your lift in fourth quadrant? Case could be, suppose your lift again is at higher level, but some students want to come, they have entered the lift and it becomes fully loaded, right? Now they want to come down, right? This is the case. Now for this case, can you tell me in which direction the speed should be? In which direction your motor should rotate? Clockwise or anti-clockwise? Sir, anti-clockwise. Sir, it The will speed rotate of clockwise, but clockwise it has होगी. to apply torque in anti-clockwise. नहीं, मुझे ये बताओ. सर एंटी क्लॉकवाइज से डिक्रीज होएगी सर, बट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए कि क्लॉकवाइज? The motor will be moving anti-clockwise. Yes, motor is required to move in anti-clockwise direction, as we had to bring this cage down. सर आपने Right? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया सर. है बेटा? सर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया. ये क्लॉकवाइज है, तो yes, it has to rotate in clockwise direction, because your cage has to put down. सिनेरियो समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? वो सर अगर फुली लोडेड है तो सर फ्री फॉल वाला केस नहीं हो जाएगा? अरे फुली लोडेड है, लानी तो नीचे ही है. तो जब तक वो रोलर जो है जिसपे ये रोप स्लाइड कर रही है, अगर वो रोलर नीचे की तरफ रोल नहीं करेगा तो नीचे आएगी कैसे लिफ्ट? यस सर. नहीं सर समझे? बट जब रिवर्स ब्रेकिंग में सर एंटी क्लॉकवाइज में चल रही थी. रुको ना, अभी पहले अच्छा इसे क्लियर करो, पहले एक बार इसे तो क्लियर करो. मैं तुम्हें सारी कहानी तो बता दी मैंने तुम्हें. अरे ये मोशन नीचे की तरफ चाहिए तो ये पुली किस तरफ मूव करनी चाहिए? सर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज करनी चाहिए कि नहीं? इसमें कौन डिसएग्री कर रहा है? अब मुझे बट इफ बताओ, इसमें करनी चाहिए कि नहीं इस तरफ? ये तो ठीक है. ये ठीक है. अब मुझे डाउट बताओ किस में था, कौन से मोड में था? सर जो मूवमेंट जो था वो किस हिसाब से मैं कंसिडर कर रहा था कि एंटी क्लॉकवाइज उल्टा बोल रहे हैं थोड़ा. Sir, he wants to say that torque should be applied in anti-clockwise. Yes, sir. So it टॉर्क और won't be मोशन में affected. कंफ्यूज हो गए. यस सर. अब तो क्लियर हो ना? यस सर. है ना? मोशन जिस तरफ है उस तरफ तो स्पीड चाहिएगी ना, रोटेशन तो उसी तरफ चाहिए. अगर ऊपर जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करनी चाहिए पुली. अगर नीचे आना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करनी चाहिए पुली. यस और नो? यस सर.
बोलो बच्चों, सबको क्लियर है कि नहीं यार? क्लियर है सर अब। यस सर। है ना? ये तो रही बात स्पीड की। अब आएगी बात लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क की। क्योंकि केज फुली लोडेड है तो ऑलरेडी जो नेट टॉर्क होगा लोड का वो किस डायरेक्शन में होगा? स्पीड की डायरेक्शन में। स्पीड की डायरेक्शन में लगा होगा। लेकिन फ्री फॉल होने से बचाने के लिए जो शाफ्ट में मोटर लगी होगी उसका टॉर्क किधर जनरेट होगा? अपोजिट टू दिस, डायरेक्शन। लोड टॉर्क। यस और नो? यस सर। आप ये देख सकते हैं इस केस में स्पीड जो मोटर की है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि जो मोटर को टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दैट मींस under this scenario your drive will be in which mode? रिवर्स ब्रेकिंग। रिवर्स ब्रेकिंग। It will be in braking mode and we can call it as reverse braking as your lift is coming down, right? Reverse braking. Is this clear now? यस सर। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज आई विल टेक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। I think it's clear to the class. Yes sir. Shall I move ahead? Yes sir. Okay. Let us discuss about the components of load torques. See, we just have learned that your motor should produce a torque TE equals to the shaft torque plus the dynamic torque if your drive is a constant inertia drive. We just have learned this, yes or no? And this is called as fundamental torque equation. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. भाई कोई तो बोलो। So what is being suggested in the book is they are suggesting that this load torque, which we are calling as a shaft torque, T small l, can be further divided into three categories or components. Three components means this TL comprises of three components. Which are those components? They said that it is made up of the friction torque. It includes the friction torque, may be denoted as TF, capital T, capital, right? We know that friction is present at the motor shaft and also in the various moving parts of the loads, right? Yes sir. So TF is the equivalent friction torque at the shaft, motor shaft, referred to the motor shaft. This says that the second component which could come in this load torque is the windage torque. What this windage torque means? Have you heard about the windage loss? Yes sir. क्या होते हैं विंडेज लॉस? इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पढ़ा होगा, बोलिए। बोलो बच्चों, जल्दी बताओ। सर एफिशिएंसी में कुछ रिडक्शन हो जाती है सर। नहीं, लॉस आएगा तो एफिशिएंसी तो रिड्यूस हो ही जाएगी, लेकिन वो लॉस कौन सा लॉस है? मतलब हम किस लॉस को काउंट कर रहे हैं? जैसे मशीन्स में तो कुछ इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं जिन्हें हम कोर लॉस और कॉपर लॉस कहते हैं, राइट? कुछ मैकेनिकल लॉस होते हैं, लेकिन कुछ को कहते हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस।
फ्रिक्शन लॉस भी समझ में आया। दो जो पार्ट होंगे उनके बीच में जो सरफेस होगी अगर वो स्मूथ नहीं है उनके बीच जो घर्षण होगा उसकी वजह से फ्रिक्शन टॉर्क होगा, राइट। लेकिन ये विंडेज का क्या चक्कर है? सर विंडेज लॉस शायद वो होता है जो जब रोटर घूम रहा होता है तो जो एयर होती है, एयर का जो उसका फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस सर। राइट। बेसिकली जब रोटर रोटेट करता है एयर गैप में, तो एयर गैप में भी जो एयर होती है इट अपोजेस द मोशन, है ना, क्योंकि वो उससे कट हो रही है, तो इट अपोजेस द मोशन एंड the extra amount of power required to compensate that machine is equal to the losses that occur because of that. बात समझ में आई है? जब मोटर रोटेट करती है तो जो विंड जनरेट करती है टॉर्क, तो टू काउंटर दैट अ मोटर हैज टू जनरेट एन एक्स्ट्रा टॉर्क एंड दैट कैन बी काउंटेड एज लॉसेस, राइट। बात को समझ में आई? समझ गए सर। So when motor runs, wind generates a torque opposing the motion and this is called as windage torque, right? This is known as windage torque. Here we are calling it as windage torque. Is this fine, bachcho? What about the third component? Third component is the torque required to do the useful work. Useful mechanical work, particularly for drives. And it can be denoted by capital T, capital L. It is capital T, capital L. Earlier we had taken capital T, small l, right? So this TL may comprise of these three components, right? Taking this study further, they say that this friction torque, which have a nonlinear characteristic of torque and speed, friction torque, right, TF, which have a nonlinear characteristic with respect to speed, and the characteristic which it possesses is like this one. Right? So this says that this characteristic is further a combination of three different torques, friction torques, right? And what are those frictions which make this a combined characteristic, which are responsible for this combined behavior or characteristic because of the friction? The one is we call it as a friction that appears in the rotating parts when your rotating part is at zero speed. And what we call that is friction at zero speed is called as, क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। अरे friction at zero speed, what we call that friction? जब कोई भी रुका रहता है, कोई भी, हाँ? Static friction. हाँ, yes, static friction. We call it as static friction. याद आ रहा है कुछ? और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कब रहता है? जब तक बॉडी रुकी हुई होती है तब तक उसपे सबसे ज्यादा क्या लगा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होता है. इज दिस फाइन? Yes. बोलो भाई. yes sir. Static friction is remains there for the lower speeds only, right? And can be represented by this kind of characteristic, TS, static friction,
Ts. The other kind of friction which can be observed in the moving parts is the viscous friction. And it has been observed that viscous friction varies linearly with the speed. है ना? Let it be TV, right? This is the friction, viscous friction or viscous friction torque, TV. And we know that this viscous friction directly varies with the speed, means it is being proportional to the speed. So we can write that TV is equals to B omega M, where B is what? B is the coefficient of viscous friction or viscous friction coefficient. Right, bachcho? Now, what about the third component? Actually, this characteristic is made up of three friction characteristics. One is the static friction, other is the viscous friction. What about the third one? If you could have learned, there is the friction that is called as Coulomb's friction. What we call them as Coulomb friction, TC. And the Coulomb friction remains independent of the speed. It is not dependent upon the speed. You can see that for every speed, the torque remains same. This friction torque remains same. And this is called as Coulomb's friction. What we call it as Coulomb's friction. TC. And it is independent of speed. Right? Viscous friction is proportional to the speed, whereas Coulomb friction is independent of the speed. Now, what we had concluded from here? We have concluded that your TL is basically made up of friction torque plus windage torque plus the load torque. Okay. Now this friction torque itself consists of or may constitute of the three frictions. One is the static friction, other is the viscous friction, and third one is the Coulomb's friction. The windage torque TW, it has been proved experimentally that it is proportional to the speed, square of the speed of the motor load system, right? So this TW is basically equals to, can be written as equals to C W omega square, where C is the proportionality constant, right? So we can write this TW as C W omega square. So for this case, for our case, now this becomes that TL is equals to TS plus TV. TV it was proportional to the speed, so we can write it as B omega M plus TC plus C W omega M square plus TL. So this will be equals to TE. This will be equals to TL, basically TL, small torque or torque at the shaft. Now this TS remains there only during the starting or zero speed only. So you can neglect this. You can neglect this. So neglecting this. Also, it has been seen that this torque TC plus windage torque, this is very small. This remains very small in comparison to this one, right? So it has been observed that in many applications,
TC plus C omega m square, right, is very small as compared to B omega m, right, that is the viscous friction, and negligible to TL. TL means capital T. Therefore, this TL becomes equals to B omega m plus TL. Yes or no? Yes, sir. Substituting this value of TL in the fundamental torque equation, your fundamental torque equation becomes equals to, or your fundamental torque equation can be represented as TE, or let it be Tm, that is the motor torque, is equals to J d omega m by dt plus B omega m plus TL, where TL is the load torque or torque required to do the useful work. Is this fine? Yes, sir. अरे बोलो भैया, कोई हाँ ना, कैसे, क्या चक्कर है? Yes, sir. ठीक है, आफ्टर दैट कितना समय बचा है? करें कुछ और 5 मिनट। आगे? Sir, 5 minutes. कल करेंगे फिर। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ये लो भाई, स्मॉल टी कैपिटल टी कौन सा? हाँ, स्मॉल टीएल उन्होंने कहा, जो स्मॉल टीएल था वो क्या था? लोड टॉर्क रेफर्ड टू दी मोटर शाफ्ट। आखिरकार मोटर को कितना टॉर्क महसूस हो रहा है, राइट, दैट इज स्मॉल टीएल। ठीक है, तो वो जो टीएल जो महसूस हो रहा मोटर को, वो किन किन कारणों से हो सकता है, उसके क्या कारण है? पहला, जो लोड टॉर्क चाहिए यूजफुल वर्क करने के लिए, एक तो वो। दूसरा, विंडेज टॉर्क जो या तो मोटर में भी है या कुछ लोड्स के साथ भी हो रहा हो वो। साथ में फ्रिक्शन टॉर्क, जो मोटर के अंदर का फ्रिक्शन प्लस जो लोड के अंदर के जो फ्रिक्शन है वो। तो उन सबको मिला के जो टॉर्क लगाना है मोटर को, वो महसूस हो रहा है शाफ्ट पे। इसका ये मतलब है। अब बात समझ में आई? ठीक है, इसके आगे हमें लोगों को पढ़ेंगे, मैं शायद आपके कोर्स में इतना ही है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। Although there are multiple methods to find the steady state stability, but here we will use the characteristics information to find that whether the operating point will be the stable or not, right? क्या करने वाले हैं? We'll see the motor load characteristics. कौन सी? Mechanical characteristics. That means torque and speed characteristics we will see. So suppose let us begin. I will do it again in the next class. But suppose this is the characteristic of a motor, है ना? मोटर की ये कैरेक्टरिस्टिक थी, लोड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमने एक लोड टॉर्क लिया, जिसकी एक ऐसा लोड लिया जिसकी जो लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक थी, जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक थी, कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो नेचुरल ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, स्टेडी स्टेट पॉइंट, वो कौन सा होगा? हम लोगों ने पढ़ा है, स्टेडी स्टेट वही बन सकता है जहां टी विल बी इक्वल टू टीएल,
Yes or no? Yes, sir. But Tm should be equals to TL at steady state. So this will be the natural operating point if we mark it as A. Yes or no? Yes, sir. Right? बस अब हमें ये कंक्लूड करना है कि whether this A, if a drive that is having a load of this characteristic and a motor of this characteristic, if it is being operating at point A, whether the point of operation will be stable or not, ये कंक्लूड करना है. वो कैसे कंक्लूड करना है? वो ऐसे कंक्लूड करना है कि अगर इस पॉइंट पर वो ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब वो इस ओमेगा m0 स्पीड पे ऑपरेट कर रही है. यस और नो? यस सर. अरे बताओ भाई, या कल ही बताऊं? कल या परसों? नहीं सर, आ रहा है सर. आ रहा है समझ में? यस सर. सर वैसे टाइम भी हो ही गया वैसे. चल भाई, कल भी एक बार बता दीजिएगा. सर रिकैप तो हो ही जाएगा. ये क्या आई शेयर्ड अ जेम फाइल विद मीटिंग, ये क्या है भैया? सर इसका क्लिक हो गया होगा गलती से, तो 3 बार क्लिक हो गया इसका.